हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों, मैंने अभी अभी बूगी नाइट्स नाम का एक इंग्लिश फिल्म देखा है नेटफ्लिक्स पर। 1997 में पहली बार थिएटर्स में रिलीज हुआ था ये फिल्म। अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर लिस्ट हुआ है। पहली बात तो बता दो, दिस फिल्म इज अबाउट पोर्नोग्राफी एंड अ पॉर्न स्टार्स लाइफ। तो अकेले देखना, मम्मी डैडी भाई बहन के साथ देखना मत, बच्चों के साथ तो ऑब्वियसली बिल्कुल मत देखना, गर्लफ्रेंड के साथ ऑब्वियसली आप देख सकते हो, बीवी के साथ भी देख सकते हो, लेकिन हाँ, बाकी फैमिली फिल्म तो नहीं कहूँगा, अडल्ट फिल्म है, क्योंकि बहुत सारे सेक्स सीन्स, न्यूड सीन्स, टॉपलेस सीन्स वगैरह वगैरह सब कुछ आपको इसमें दिखाई देगा। अब फिल्म क्या है मैं आपको बताता हूँ। पोर्नोग्राफी के ऊपर है, बट इट इज एक्चुअली बेस्ड इन द गोल्डन एज ऑफ porn that happened in America between I think 1969 to 1984, जिसको गोल्डन एज ऑफ पोर्नोग्राफी कहा जाता था अमेरिका में। और इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो टाइम पे, वो पीरियड में जो भी पॉर्न फिल्म्स, ब्लू फिल्म्स बनते थे, उनको अच्छा पॉजिटिव क्रिटिकल अक्लेम मिलता था अमेरिका में। तो इसलिए गोल्डन एज ऑफ पोर्नोग्राफी कहा जाता है। और ये एज में सेट है बूगी नाइट्स भी। एंड इट क्रॉनिकल्स द राइज एंड फॉल of a porn star who goes by this name called Dirk Diggler, played by Mark Wahlberg। दोस्तों, ये फिल्म आपको दो चीज़ों के लिए देखना है। पहला, द अमेजिंग डायरेक्शन के लिए, और दूसरा द आउटस्टैंडिंग एक्टिंग के लिए। पहला डायरेक्शन की अगर बात करें यार, कैमरा मूवमेंट देखो, राइट फ्रॉम द वे इट बिगिंस, द वेरी फर्स्ट सीन विच टेक्स प्लेस इनसाइड दैट पब when Burt Reynolds and Julianne Moore enters, yeah, look at the way the camera follows them. It's one single continuous shot, about 7 to 10 minutes का एक shot है. It starts from outside the bar, outside the pub, follows Burt Reynolds and Julianne Moore inside to the table, to the waiters, the waitresses, the roller girl that is played by Heather Graham, who always is on skates. And then finally it goes and stops when Mark Wahlberg comes into the picture, comes into the frame, and that is the time when this porn director, Burt Reynolds, notices him for the first time. वो dishwasher होता है Mark Wahlberg, and how after noticing him, Burt Reynolds gives him an offer to become a porn star, and how Mark Wahlberg, who is just about a 17-18-year-old guy, enters the porn industry, first takes the alias, the pseudo name of Dirk Diggler, and how he rises and becomes a big porn star, and how then he starts using drugs, cocaine, brown sugar, which spirals and sends him down into an abyss, and he loses everything, and then leaves the porn industry, gets into rock and roll, and then वहाँ पे कुछ जमा नहीं तो वो छोड़ के मारा मारा फिरता है। And finally what happens? Does he emerge from this pit that he finds himself in? And does he get back into the porn industry, or does he do something else? Does he win back his friends? Does he get the fame and money that he once had? That is what the film story is all about, dosto. The direction is outstanding, the screenplay is great, the music, the background music especially, is bloody brilliant, and acting by Mark Wahlberg, Burt Reynolds, Julianne Moore, Heather Graham, John है, Don है, सभी लोग हैं इसमें जो रिकग्नाइजेबल फेसेस आप देखोगे। सुपर्ब लगेगा आपको एक्टिंग। तो डायरेक्शन और एक्टिंग के लिए देखिए। डायरेक्शन की बात करें, पहला तो वो कैमरा मूवमेंट का बारे में बात किया, बट द वे पॉल एंडरसन, इज द डायरेक्टर, हैज डायरेक्टेड द पॉर्न सीन्स, द सेक्स सीन्स। देयर इज दिस सीन, द फर्स्ट सीन बिटवीन मार्क एंड जुलियन, दे आर हैविंग सेक्स। ऑफ कोर्स when the foreplay begins, they shed their clothes, the foreplay happens, they are topless, you will get to see those scenes on camera. And then finally when they start getting into the act, the actual penetration, the stroking, the thrusting, look at the way the camera cuts from the actors to the actual camera that is shooting the scene. All you get to see is the lens, the rolling and the rolling of the camera. It is brilliant direction. Yeah, the way they have shot this porn wala film based on porn stars, sometimes you'll get the impression that you're watching a documentary, but brilliant screenplay keeps you nicely engaged. And the last scene, the very last scene, is the shocker, is the absolute shocker, the shocking the shocking scene of the entire film, the most shocking scene of the entire film, वो लास्ट सीक्वेंस है यार, where your jaws will actually drop, अरे ये क्या देख लिया करके। बट एनीवेज, देख लो यार, डायरेक्शन के लिए देख लो, एक्टिंग के लिए देख लो, आपको वो गोल्डन एज ऑफ पॉर्न कैसे फंक्शन करता था वो टाइम पे, कैसे जब जो रोल्स पे जो लोग बनाते थे फिल्म्स, उसके बाद थिएटर्स के लिए, उसके बाद वीडियो कैसेट्स का जब डिमांड आया तो वीडियो कैसेट्स, वीडियो टेप के लिए वो लोग फिल्म बनाने के लिए क्या कुछ मेहनत किया, क्या कुछ इनोवेशंस लाया, वेदर वर्कड और नॉट, ये सारा एक अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगा। इट विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस। देख लीजिए। आई विल गिव दिस फिल्म 3.5 स्टार्स। इफ यू हैपन टू वॉच इट, लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट द फिल्म, और आपका ओपिनियन क्या है, आपको अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, ये भी लिख कर बताना। फॉर द मोमेंट, सोनम सेस टाटा।